Good morning, everyone. Good morning. Good morning. नहीं नहीं करता है, रुको ना। 2 मिनट तो रुक जाओ। अगर एशियन सेशन बुलिश सस्टेन हो गई ना, मजा आ जाएगा आज। सस्टेन होना चाहिए। एनीवेयर बिटवीन 400 टिप्स के ऊपर सस्टेन हो जाती है, 40 पॉइंट्स के ऊपर। वी कुड हैव a pleasant and beautiful moment. गुड मॉर्निंग तो सर। हाँ, अगर ये कैंडल सस्टेन होती है देन हम 150 मैप करेंगे, क्योंकि सरप्लस मैपिंग है ना। सस्टेन होना मांगता है। सही है। क्यों नहीं मांगेगा? मार्केट बताने तो दो, शॉर्ट की तरफ जा रहा है तब देखेंगे ना शॉर्ट के लिए, उससे पहले थोड़ी शॉर्ट के लिए देखेंगे यार, कम ऑन। कीपिंग इन माइंड, गैप अप ओपन करके कवर नहीं किया है, फर्स्ट चीज। नीचे आने का संभावना। सेकंड, टू मेनी एलजी पॉइंट्स, 3 एलजी पॉइंट्स इज देयर इन द मार्केट, राइट? फॉलोड थ्रू मार्केट, स्लो एंड स्टडी, 50 पॉइंट्स प्लस मूवमेंट में है henceforth। क्या हमें 3 विंग सेटअप मान सकता है? रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा तब मान सकता है। एंड उसके साथ सेटअप 2 का क्या है? रिजेक्शन एंड कंटिन्यूटी में आना है। देन ओनली दैट विल बी कंसिडर्ड एज 3 विंग सेटअप, नॉट प्रायर टू दैट। तब तक मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है रहेगा। गुड मॉर्निंग तो सर। गुड मॉर्निंग अर्लिया। लॉन्ग की ट्रेड पे हो? नहीं यार, सेटअप ही नहीं बना तो कहाँ से बनने तो दो सर। आज मूवमेंट जबरदस्त होने वाला है, इतना तो पता है। एशियन सेशन में ही 50 पॉइंट्स की मूवमेंट दिया है, तो समझो लंदन एंड न्यूयॉर्क क्या धमाल मचाएगी। We'll start in 2 minutes, huh? Analysis wise. Market is like, you wait, I will give you the indication, execute. 4382 में S2B1 के साथ लॉन्ग किया है, शुड आई होल्ड? MTSL के साथ 70 पिप्स ही चल रहा है।
अगर सस्टेन होती है फॉलोड थ्रू में ये कैंडल एंड कमिंग कैंडल, नेक्स्ट टारगेट्स भी बता देता हूँ। सरप्लस का जो नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, 100% ब्रेक होने के बाद same allocation will be taken under the consideration, this one, okay? रीजन भी क्लियर है, ये कैंडल 100% के ऊपर सस्टेन होना है, रिजेक्शन आके कंटिन्यूटी में दिखेगा तभी ही 200 पिप्स की मूवमेंट। नॉट प्रायर टू दैट। एंड जितने भी बिगिनर्स है, सेटअप बनने तक हरी करना ही मत किसी भी हाल में, क्योंकि एक एक कैंडल का पोजीशन अगर नोटिस कर रहे हो इज ऑफ 60 पिप्स, 50 पिप्स प्लस, राइट? सो यहाँ पे आपको एसेलेशन सेशन में रखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो सेटअप फॉर्म करने दो, मार्केट इंडिकेट करने दो, उसके बाद ही देखना, उससे पहले नहीं। एंड एशियन सेशन में 30 पिप से ज्यादा देना मत मार्केट को। अगर 30 पिप के रेंज में चाहिए तो एग्जीक्यूशन शुड बी लुक इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेटअप, नॉट अगेंस्ट इट। ठीक है? द ओनली रिकमेंडेशन। गुड मॉर्निंग हैदर। नहीं नहीं सर, एक रिस्क लेके 4387 पे एंट्री किया हो, डायरेक्शन सही है, 50 पिप्स चल रहा है। स्लो एंड स्टडी 150 तक देख लो, बट एमटीएसएल स्ट्रॉन्ग रखना उतना है, कुछ भी हो जाए। ओके। BTC is currently in consolidation, so no plan of action will be looked at the current stage. So जो डायरेक्शन वॉल्यूम के साथ है, that is gold. Execution will be looked in perspective of that only. ठीक है? सर हम सर हम कैसे सिर्फ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और सर हम कैसे फाइंड कर कितना रिट्रेसमेंट आएगा,
कौन सा हिंदी है ये? सर हम कैन एनीवन ट्रांसलेट दिस फॉर मी? सर हम कैसे सिर्फ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और कर सकते? सर हम कैसे फाइंड करें कि कितनी रिट्रेसमेंट आएगी? आप तो सारे टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में हम ट्रेड नहीं करते यार, अगर वो पूछना चाहते हो तो। स्टार्टिंग टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स आइदर। ओके। रिट्रेसमेंट आइडेंटिफिकेशन पर्सपेक्टिव अगर आप जानना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी the previous first come first serve demand will be taken under the consideration of mapping. With that, a formulation of TTS 2.0 will be allotted with swing high, swing low and retracement. सर हम कैसे फाइंड करें कि रिट्रेसमेंट आएगी? आप तो बड़े टाइम फ्रेम पर करते हो, छोटे में हम कैसे फाइंड करें? छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो, एसएल देने को तैयार हो? Got it. Thank you, Arya. So we don't trade in 5 minutes either. 15 minutes is a starting time frame correspondence to the analysis of 1 hour and 4 hours, because we don't scalp over here henceforth. Good morning, Patel. After a very long time, how are you? दिसंबर की छुट्टियां स्टार्ट हो गई क्या? Good sir, doing boring job. Hmm, सही है. No, no sir, हमको vacations नहीं होते. Let's start with the analysis. Right? So very simple plan of action है आज के लिए. Right? What is volume indicating at the current state? First thing. फ्राइडे के दिन अगर नोटिस करोगे, फॉलोड थ्रू में मूवमेंट एक्शन प्लान डेवलप हुआ था, स्टार्टिंग विद द लॉन्ग ट्रेड ऑफ एक्शन इन एशियन सेशन. उसके बाद वॉल्यूम एक पोजिशनल स्लॉटिंग में दिखाई दी थी, उधर से रिट्रेसमेंट डेवलप हुआ था. उसी रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट अभी क्या कर रहा है? एशियन सेशन में फर्स्ट हाई वॉल्यूम दिखाया है जाकि रिट्रेसमेंट का, राइट? जो कि एट द करेंट पॉइंट मार्केट तैयार नहीं है वो रिट्रेसमेंट लेने के लिए. सो व्हाट यू विल बी डूइंग एट दिस करेंट सर्कमस्टांशियल वे? अगर मार्केट को रिट्रेस होना है, फर्स्ट एक्शन प्लान, इट शुड रीच द नियरेस्ट रिजेक्शन पॉइंट. आज के दिन का एक ही रिजेक्शन पॉइंट है जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, जो कि क्रिएट होने वाला था बट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सरप्लस मिनिमलिटी M2. वो मैं 15 मिनट में दिखाऊंगा. उसका टारगेट हमेशा 100% टू 150 तक की मूवमेंट डेवलप होती है, राइट? सो जब ये डेवलपमेंट में आती है मूवमेंट, तब वहां पे एक सेटअप फॉर्म होने के बाद जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डेवलपमेंट दिखाया है, जो कि ये वाला, ये प्लान ऑफ एक्शन हम अलॉट करेंगे इन द रिजेक्शन पर्सपेक्टिव ऑफ द सेटअप. जब तक वो सेटअप डेवलप नहीं होगी,
ट्रेड ऑफ एक्शन प्लान हम देखेंगे नहीं एट द करेंट स्टेट, राइट? जब तक सेटअप फॉर्म नहीं होगी तब तक ये वाला डिमांड 1 आवर का प्लेसमेंट में नहीं आएगा. Am I clear? So with that plan of action, what is the next step that we have to be looking at? 15 minutes. 15 minutes में कितना एलजी पॉइंट डेवलप हुआ है? उससे पहले एक और चीज याद रखना, 1 आवर में क्या हमारे पास एलजी पॉइंट है? एट दिस स्टेज यस, 1 LG पॉइंट एंड 2 LG पॉइंट. 2 LG पॉइंट डेवलपमेंट में 1 आवर में है, मतलब डेफिनेटली वो हंट होगी कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट आने के लिए, राइट? डाइल्यूटेड लिक्विडिटी पॉइंट इज एट 4355 range and 4345 range, right? When will we be looking for that liquidity point? कब देखेंगे हम उस liquidity को hunt होते हुए? जब हमें setup formation of a dilution create होते हुए दिखेगा, तब जाके हम trade of execution को plan out करेंगे, उससे पहले नहीं. ठीक है? So with that, coming to 15 minutes, what do we see? Each and every movement action plan is carry forwarded with a gap up opening of today, right? So जब भी gap up opening होता है, हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट वो गैप कवर करने आता ही आता है. In this today's scenario, there is no gap coverage, market continuity में गया है, उसके साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप हुई है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कन्वर्जन नहीं आया है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मूवमेंट के साथ स्लो एंड स्टडी डेवलपमेंट ही रहेगी टिल द टाइम द फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट इज नॉट शोकेस्ड, राइट? सो इन दिस केस मेजर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ LG 1 2 3, राइट? इसके लिए डेवलपमेंट में कैसे होना चाहिए? Let it reach this point. With reaching this point, let it create a stabilized drop of a demand candle. उसके बाद कंटिन्यूटी में जो रिजेक्शन से साथ कन्वर्जन में दिखाता है, उस कैंडल ऑफ प्लान में हम नेक्स्ट ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे, नॉट प्रायर टू दैट. ठीक है? सो दिस आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. मार्केट रनिंग में मत एंट्री करो, विक क्रिएट नहीं हुआ है, डेफिनेटली नीचे आके ऊपर जाएगा. Okay, so these are the few action plans that market will be followed through today. Henceforth, don't panic. Be bit greedy today because direction hai, but followed through with a right risk to reward. Okay, so this is good for you guys. Any doubts? Please do ask. Sir, LG point क्या है? Liquidity grab candle. हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग वीरेश. और सर आपके किताब TTS अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है. Speak with the team, they'll help you out to get you the things. Okay, Viresh? How did you know that market will go up? कौन सा भी लाइव स्ट्रीमिंग उठा के देख लो, पता चल जाएगा. हमें कैसे पता चलता है?
Either hope your doubt is cleared here. सर सब लोग क्रिसमस ऑफर छोड़ते हैं, आप भी बुक पे डिस्काउंट दे दो। ये सेम क्वेश्चन आप हर एक फेस्टिवल पे पूछते हो बट आप खरीदते नहीं हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू, बट या, डोंट आस्क द सेम थिंग। उतना ही टाइम आप यहाँ पे व्यस्त होते तो अब तक सीख चुके होते। ब्यूटीफुल गाइस, जाने दो उसे पूरा। सर पहले आपने बीच में स्ट्रीम कम कर दिया था, तभी मुझे लगा आपने छोड़ दिया है स्ट्रीमिंग करना। हाँ, ज्यादा टाइम के लिए करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वी स्टिक टू द प्लान ऑफ 1 hour स्ट्रीमिंग। 140 pips running, entered with S2B1 sir, apology for it, no worries। MTSL फॉलो करो। कहाँ पे एंट्री हुआ? टेक होम 100 में रखना। Streaming will be there for next 20 minutes, जो भी doubts है please do ask।
अरे विन रेट तुम 10वीं बार पूछ रहे हो. हाउ डू आई इंक्रीज माई विन रेट, हाउ टू एलिमिनेट बैड ट्रेड्स. हाँ, उसका जवाब मैं दे दूंगा. इट्स वेरी सिंपल. टू एलिन एल to eliminate any bad executions, you have to have patience, and you have to repeat only one and only execution, that is waiting. Right? So, in that propaganda, there is only one thing that you can do. वॉल्यूम को फॉलो करते हुए सेटअप को एनालाइज करना. जब वॉल्यूम को फॉलो करते हुए सेटअप को एनालाइज करोगे, तब यू विल गेट अ राइट strategical analysis to execute and hold the trades till the targets. TTS 2.0 को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो? यूटिलाइज दैट. एंड व्हाट काइंड ऑफ विन रेट शुड आई एम फॉर? अगर आपका विन रेट at the current state is of 40%, 50%, your next plotting should be at 60 to 70%. If your win rate is at 60 to 70%, your next plotting should be at 80 to 85%. If your win rate plotting is at 85% or 80%, then your aim should be at 90 to 97%. Quarter one may keep it at 85%. Quarter two, quarter three, quarter four, it should always be at 90 plus. दिन में 3 ट्रेड के ऊपर मत जाओ अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस में है तो. अगर दिन में first trade is in the green, second trade is in the green, third trade is in the red, then you can utilize the profits to play the game along. Okay? So only one condition. अगर first trade, second trade red में close हुआ है, अगर 1000 पिप की भी movement आ रहा है, you are not going to execute the trade. This should be your mindset. अगर फर्स्ट ट्रेड विनिंग में है, सेकंड ट्रेड विनिंग में है, थर्ड ट्रेड लॉस में हुआ है, then execute how much ever you want to play around with. There is only one simple mantra to be followed in this business. कैपिटल को कंपाउंड करो, प्रॉफिट्स पे रिस्क लो. कैपिटल पे नहीं, प्रॉफिट्स पे जितना रिस्क लेना है लो. राइट? दैट्स व्हेन द गेम विल स्टार्ट चेंजिंग. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है आप लोगों के साथ? आप कैपिटल के साथ ही रिस्क लेते हो. कैपिटल को कंपाउंड करो पहला. राइट? जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स में रिस्क लो, क्योंकि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है. गुड मॉर्निंग श्रीकांत. श्रीकांत, आपके लिए वर्षा ने आज एक सीए लाइन किया था ना सेशन. आज नहीं हो पाएगा, कल करता है.
Okay, sorry for the inconveniences. Okay, Arya. नहीं, मुझसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. मेरे को सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा. सिंपल एज दैट. एग्जीक्यूशन धीरे धीरे परफेक्ट कर रहा हूँ सर. मैपिंग इज ऑलमोस्ट एट 100%. मैपिंग 100% हो ही नहीं सकती है. ओके, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 90 to 95 बोल सकते हो आप. पिरामिडिकल प्लानिंग्स करना एग्जीक्यूशन में. ओके, simple answer is very simple. If your starting point goal is to reach $1 million, बहुत छोटा नंबर हो गया. Sorry. Is to reach $10 million. That should be your thinking. 1 million is just 7 crores. Not interested. Okay. So to reach this 10 million, it doesn't matter what your capital is, right? Let it be 1,000. Let it be 5,000. Let it be 10,000. Okay. Your first most difficult rank is to reach 100K, which is 93 lakhs. इस नंबर पे जिस दिन आप पहुंचे ना, यहाँ से कॉम्पाउंडिंग स्ट्रक्चर बहुत आसान है. Followed through mapping 1, your direct target allocations will get on the raise of 100 pips will be somewhere around 30,000, 40,000 per trades, right? So the first difficult task for you guys will be only this.
जिस दिन 100K पहुंच गए, समझ लो वहां से एग्जीक्यूशंस टू द मार्क ऑफ 10 million is very easy. Okay. लोग बोलते हैं 1 million is difficult. You are saying 100K is difficult. See, when you are doing a physical business, capital requirement will be higher. This business is all about trading, right? Compounding will be done on a day-to-day basis, but business compounding is not done on a day-to-day basis, no? The B2C, which is called as bill to company, is on 30 days timeline. Here, B2C is 24 hours timeline. Henceforth, there 1 million is difficult, here 100K is difficult. यहाँ पे 100K पहुंच जाएगा तो दूसरा हर एक नंबर बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगा. ये 10 million ना बहुत छोटा नंबर है. I'm saying you, it's very small. जिस दिन आप पैसों के पीछे भागना छोड़ के जिस दिन आप सीखने के पीछे भागोगे उस दिन देखो एग्जीक्यूशंस कैसे परफेक्शंस में आएंगे एंड ग्रोथ ऑफ कंपाउंडिंग कैसा कितना तेजी से बढ़ेगा. Is 1 lakh good enough to settle in Bangalore? Depends. Jayanagar, Kormangla, Laval Road, Indira Nagar, not possible. आपका वीकेंड का खर्चा 1 लाख निकल जाएगा यार. So how much you should be earning to settle in a good area in Bangalore? 4 lakhs. If you are humble enough and weekly expenditures is within the range of 50,000, then 4 lakhs.
And if you're staying in this area, definitely the expenditures will not be lesser than 60,000 for sure. Henceforth, the good amount to settle in Bangalore in this areas could be somewhere around 5 to 6 lakhs. टॉप वन टॉप 1% अर्निंग के लिए आपको चाहिए इंडिया में सिर्फ 2.5 lakhs. वो हिंदी में बोलने गया 1.5 लाख ना नहीं 1.5 लाख नहीं क्या बोलता है 2.5 lakhs to be the top 1% of Indian earners per month. One trade a month to be in niche. हमारा एक ट्रेड यूएस का टॉप 1% का रेंज में आता है क्या बात कर रहे हो ब्यूटीफुल गाइस एमटीएसएल फॉलो करके चलो वेयर हैव यू एंटर्ड छोटा रिस्क यहाँ पे एलजी के साथ फर्स्ट ट्रेड है तो क्लोजिंग तो ग्रीन में ही करूंगा तो लेट उठा आज तो उसके लिए what is the one strategy to sustain in this market? Don't blow the accounts by entering randomly. Today was very help. क्या हो गया आज क्या बता दिया मैंने कुछ भी तो नहीं बोला आज same analysis same topics does traders really need a car to show off एक चीज सुन लो मिस शैलजा पाठक सुबह से शाम तक घर में ट्रेड करते रहोगे वीकेंड के लिए spending that much of money is not worth. If I settle in India, I could have four vehicles. One is moped, one a normal car, one a lavish car, another one business car. Okay. The lavish car will come out every weekends. Business car will come to go for meetings. एक नॉर्मल कार घर का सामान गमाने खरीदने के लिए एंड एक मोपेड रात में घूमने के लिए बिजनेस कार्स करके भी होता है क्या यस मैम मर्सिडीज एस क्लास
right? BMW 7 Series. कहाँ पे क्लोज करोगे ये ट्रेड? एनीथिंग अबव 100 पिप्स. एग्जीक्यूशंस. चलो, आज भी लाइव ट्रेड में ही ट्रेड हो गया. मजा आ गया. जितने लोग ग्रुप में हैं, उनका एग्जीक्यूशन यहाँ पे ही हो चुका रहना चाहिए था क्योंकि लेवल्स शेयर हो चुकी थी. अगर नहीं किए हो, इट्स योर फॉल्ट, नॉट माइंड. अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो सीटीसी प्लस 20 पिप्स में आउट. फर्स्ट ट्रेड, आई लाइक टू क्लोज इट इन ग्रीन. ऐसे ड्यू. कितना शानदार स्लो एंड स्टडी मूवमेंट आ रही है. मजा आ गया. कितने दिनों के बाद ऐसा आया. धीरे धीरे से. वो जो क्विक मूवमेंट आने वाला है ना बहुत जल्द, 4355 एंड 4361 का. आई एम लिटरली वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट. स्ट्रीमिंग विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. जो भी डाउट है पूछ लेना. अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैपिंग ये वाला यहाँ पे प्लेस होगा. ठीक है. एग्जाम्पल, if this candle closes in red, this will be the first come first serve demand which will be placed in the protege moment over here. So does volume indicate beforehand that we will be in range for some time? And how does that look? See,
Volume always indicates two things. One, it will be in a zone which we call it as an iceberg, and another one, a spike in the candle. जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट है एंड आपको वॉल्यूम में स्पाइक मिला है, वहां से डेफिनेटली मार्केट विल रीच टू द नियरेस्ट रिजेक्शन पॉइंट, लेट इट बी सरप्लस, मिनिमलिटी और सप्लाई डिमांड, एंड वहां से आपको रिजेक्शन दिखने को मिलेगी. अगर मार्केट एक डायरेक्शन में है एंड वॉल्यूम एक जोन में है, तो मार्केट क्या करेगा? स्लो एंड स्टडीली जो आइसबर्ग जोन है उस जोन में मूवमेंट डेवलप करेगा. एग्जाम्पल देखना चाहते हो? 1 आवर में दिखा भी दूंगा. राइट? What do you notice over here? 19th के दिन डेवलपमेंट क्या हुआ? रिवर्सल का. उसके बाद मार्केट आइसबर्ग जोन में थी. स्लो एंड स्टडी मूवमेंट वाज टुवर्ड्स बुलिश. राइट? कैरी फॉरवर्डेड टू द मूवमेंट एक्शन प्लान ऑफ ए न्यू स्कैंडल, जो कि रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट में आई है. सो इन टुडेज सिनेरियो व्हाट डू वी नोटिस? मार्केट एक रिजेक्शन पॉइंट दिखाने के बाद इट्स गोइंग अंडर अ आइसबर्ग जोन अगेन. When the market is getting into an iceberg zone, so it will definitely go to the nearest rejection point, which is at the current moment surplus 150 plus. Okay, Arya? सर ग्रुप कैसे ऐड होना है? पब्लिक ग्रुप नहीं है हमारे पास. मिस्टर मूवी अड्डा. It's only for LTD members and the TTS book holders. To cross verify the analysis. सर डिमांड मैप कर दो, चला गया. Ambika, you're late. Join back after 11:30, no? Yeah. Thank you so much. अभी 5 मिनट है.
ये कैंडल रेड में क्लोज होने के लिए। ओके, अगर क्लोज होगा तब मैप करना है। यस। Good morning, Shreyas. You came when the stream is getting closed. All the beginners, all the new members, whichever strategy, whichever concept, whichever rules you guys are following, it doesn't matter. Make sure you backtest that for 6 months, forward test it for 6 months, 1 month of live analysis of that concept, and then come with a smaller capital, execute the trades, compound the funds, following a proper risk to reward, remove fear, greed, and FOMO from the mind. How can you do it? By meditating, reading books, and by doing yoga. It's your hard earned money, so don't give it to any manhandlers nor follow any tips. Learn before you earn. One good trade is a trade executed by yourself, your mindset, your analysis, your wins, your loss. You feel happy when you do that. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.